everyone, welcome to this new video. এই ভিডিওরে আমি ক্লাস 10 ର जो सर्किल चैप्टर अछि जहार ଆମେ थ्योरी लास्ट वीडियो रे ऑलरेडी पढ़ी सारी जे तार ଆମେ एक्सरसाइज 10.2 ର अप टू क्वेश्चन नंबर 8 एथरे सॉल्व करबा आउ या परे आउ गोटे वीडियो आसीबो सेथरे ଆମେ बाकी जेतरा क्वेश्चन रह गला सेते ଆମେ सॉल्व करबा ठीक अछि तो एबे स्टार्ट करबा फर्स्ट क्वेश्चन रे फर्स्ट क्वेश्चन कोन कहि जे from a point Q the length of the tangent to a circle is 24 cm and the distance of Q from the center is 25 cm. The radius of the circle is what? हमको कोन बाहर करबार अछि सर्किल रो रेडियस बाहर करबार अछि तो देखो जदि एठी हमर गोटे सर्किल एम्ति हे गला सपोज दिस इज ए सर्किल and this is the center and this is the center. Let the center is O. Okay, from a point Q the length of the tangent to a circle is 24 centimeter. That means there is a tangent to this circle, there is a tangent to this circle from point Q, okay, whose length is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter. That means this distance, this is 25 centimeter. Okay, we need to find out the radius of the circle. So let this point be P. माने ये जो point of contact को हमें ना दे देले P. OP ही जो radius तो हमको OP बाहर करेगा अच्छी. So you can see that this angle OPQ will be 90 degree because we know that at the point of contact radius is perpendicular on the tangent. So now as the triangle OPQ is right angle triangle कोन होइबो हमें एथे पाइथागोरस थ्योरम यूज करि परिबा पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर रो स्क्वायर माने OP स्क्वायर प्लस बेस रो स्क्वायर माने PQ रो स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माने OQ रो स्क्वायर. This implies that suppose OP is x, so x square plus 24 square is equal to 25 रो square. This implies x square is equal to x square plus 576 is equal to 625. That means x square is equal to 49 and x will be equal to 7. So the value of OP or the radius is 7 centimeter. So this will be our answer. Now the second question. If TP and TQ are the two tangents to a circle with center O so that angle POQ is 110 degree, then angle PTQ is equal to what? देखो ए फिगर रे बे हमें देखिबा जदी कोन अछि एटा सेंटर अछि एठी सेंटर कोन अछि हमें देखिबा सेंटर कोन अछि एटा O अछि आउ ए जो T अछि T टा गुटे एक्सटीरियर पॉइंट ए पॉइंट रु ए सर्किल को तीटा टेंजेंट ड्रा कराई गोटे P पॉइंट रे अछि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गोटे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हला पॉइंट Q. तो ए जो P रु O को रेडियस अछि आ Q रु जो O को रेडियस अछि या भीतर केते डिग्री क्रिएट हेइ जी 110 डिग्री 110 डिग्री हला हमको कोन फाइंड आउट करियार अछि PTQ रो एंगल रो वैल्यू फाइंड आउट करियार अछि. ओके सो एठी हमें कोन करिया रिबा हमें जानि छे जे इन क्वाड्रिलेटरल ए जो हमर क्रिएट हेइ PTQO क्वाड्रिलेटरल जो अछि सेतरे कोन अछि एंगल POQ इज इक्वल टू केते 110 डिग्री. ओके एंड एंगल OPT is equal to 90 degree. Also angle OQT is equal to 90 degree. कहीं के हो ये दुइटा
because radius is perpendicular to the tangent at point of contact. এটা আমি পড়িছি ঠিক আছে now we know that the sum of all the four angles of a quadrilateral is 360 degree. Okay, so the remaining angle T will be कौन हम 360 माइनस यही जिते एंगल अच्छी सबूर सम करवा आम तो लेट एंगल PTQ रो वैल्यू धरि नियो x डिग्री प्लस POQ केते अछि 110 डिग्री नेक्स्ट एटा केते अछि 90 डिग्री आउ OQT भी 90 डिग्री तो इज इक्वल टू हे जिवो 360 डिग्री दैट मींस x प्लस ए सब को जदी हम ऐड करबा एटा हला 290 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री हला तो x वैल्यू केते हे जिवो 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री दैट मींस 70 डिग्री केते हे जिवो 70 डिग्री हे जिवो ए एंगल टा 70 डिग्री हे जिवो देखो एथुरो हमें आउ गोटे जिंस जानिया पाइले जे गोटे एक्सटीरियर पॉइंट रु जदी दीटा एमदी टेंजेंट ड्रा करा हेजी आउ ताकू जदी हमें दीटा तार करेस्पोंडिंग रेडियस नेकी गोटे जदी हमें क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करूचे then that quadrilateral will be a cyclic quadrilateral. Cyclic quadrilateral काहे कहै जिवो because the opposite angle जोटा अछि तांकर सम केते हो जे एटा 180 डिग्री हो so we can say that this quadrilateral is a cyclic quadrilateral. Okay, next एबे देखो next question if tangents PA and PB from A point P to A circle with center O are inclined to each other at 80 degree then POA is equal to what? तो हम फर्स्ट यार यदि हम ड्रॉ करबा देखो एमती गोटे सर्किल अछि जो सर्किल रो सेंटर कोठी अछि ओ पॉइंट रे सेंटर अछि तो बाहर गोटे अछि पॉइंट हमरो P पॉइंट जोठु की दीटा टेंजेंट क्रिएट करा हेजी गोटे पॉइंट ए रे टच करछि सर्किल को आ गोटे पॉइंट बी रे टच करछि सर्किल को तो एथरे कोन कहै हेछि जे एंगल P टा जोटा दैट इज 80 डिग्री केते डिग्री 80 डिग्री देन वी हैव टू फाइंड आउट एंगल POA POA कोटा हबो ए रो O को जॉइन कर देली गोटे रेडियस हला आ O रो पुनी P को जॉइन कर ठीक अछि एबे जदि हम O रो P एबे जदि हमें O रु जदि B को भी जॉइन कर देबा हमें जानि छे जे ए दीटा जो ट्रायंगल क्रिएट हला दिस टू ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट हां कि नहीं कॉन्ग्रुएंट काहे के हबो बिकॉज़ OP आउ कॉन्ग्रुएंट काहे के हबो काहे कि ना देखो हमें लिखि पारिबा इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP कोन हबो OP is common side OP is common side OA is equal to OB काहे कि because both are radius हां कि नहीं आ गोटे कोन जे एंगल OAP is equal to एंगल OBP because both are 90 degree काहे कि 90 डिग्री बिकॉज़ ए रेडियस टा कोन हो टेंजेंट को परपेंडिकुलर हो को पॉइंट रे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रे ठीक अछि सो कोन लिखि परिबा ट्रायंगल OAP is congruent to triangle OBP so by CPCT that means corresponding parts of congruent triangle कोन हो एथिरे एंगल OPA is equal to angle OPP हे बाकी एठी कोन देई जी ए टोटल एंगल ला 80 डिग्री बोल देई जी ए टोटल एंगल आउ एटा दीटा सेम हे जाउ जी एबे हम एठी प्रूफ करले तो जेहेतु ए दीटा सेम गोटे गोटे एंगल केते हबो OPA इज इक्वल टू केते हेइबो 80/2 माने 40 डिग्री हे जिवो ठीक अछि
तो आमे कोन देखिले एंगल ओपीए इज 40 डिग्री ऑल्सो आमे कोन जानि जे एंगल ओएपी 90 डिग्री तो एई ट्रायंगल को देखो एई ट्रायंगल रे ए गोटे एंगल आउ ए गोटे एंगल आमे जानि सारी जे बाकी केते रहिला एंगल ए ओ बी रहिला एटा केते हबो 180 डिग्री माइनस कोन हबो एई दुइटा रो सम हबो 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री बिकॉज गोटे ट्रायंगल रो सम ऑफ द एंगल्स केते हेथाय 180 हेथाय सो हमें 180 ରୁ बाकी दुइटा रो सम को माइनस कर देबा तो एटा केते हबो 180 minus 130 that means 50 degree so answer will be 50 degree. Now question number 4, prove that the tangents drawn at the ends of a diameter of the circle are parallel. हला हमको एटा प्रूव करियार अछि देखो मु जदि एठी गोटे सर्किल ड्रा कली and I named the center as O. Let A B is the diameter. ठीक अछि कोन कहि जे prove that the tangents drawn at the end of the diameter माने गोटे एंड पॉइंट हला A आ गोटे एंड पॉइंट हला B हमें A पॉइंट रो धरिना म एम्ति करी गोटे टेंजेंट ड्रा कली A पॉइंट रे हला आ गोटे B पॉइंट रो एम्ति करी गोटे टेंजेंट ड्रा कली ठीक अछि A और B पॉइंट रो दीटा टेंजेंट ड्रा कली मते कोन प्रूव करया अछि टू प्रूव कोन प्रूव करया अछि जे धरना A टेंजेंट रो जो धरना A पॉइंट रो जो टेंजेंट पास करूजी सेटा हला x y लाइन एटा धरनियो आउ B पॉइंट रो जो टेंजेंट पास करूची तार हमें दे दवा देना L M तो हमको कोन प्रूव करया अछि xy टेंजेंट टा L M टेंजेंट सह पैरेलल बोली प्रूव करिया अछि ओके सो हमें केमती प्रूव करिया देखो हमें कोन जानि जे as radius is perpendicular on the tangent at point of contact OB LM सह एठी 90 डिग्री क्रिएट करिवो आउ एक्स वाई सह OA एठी 90 डिग्री क्रिएट करिवो तो देखो आमे लिखि परिबा जे OBL एंगल 90 डिग्री एंड OAY angle भी 90 degree. Now you can see that OBL is equal to angle OAY. हे जिवाटा तो एई दिटा जदि समान हे गला तमे देखि पारियो XY आउ LM जो लाइन अछि AB डा तार ट्रांसवर्सल आकारे एठी एक्ट करूची then these two angles are कोन alternate interior angle alternate interior angle आउ alternate interior angle जदि सेम हे गला माने इक्वल हे गला तो कोन हे जाय सो xy will be parallel to LM ठीक अछि so this proves that the tangents drawn at the end of a diameter of a circle are parallel. Okay, this is the proof. Next question, prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center. Okay, देखो एटा हमें केमती प्रूव करबा तो हमें ड्रा करबा एठी पुणी गोटे सर्किल एठी यदि मु एमती गोटे सर्किल ड्रा कर देली आउ तार सेंटर ना दे देली सपोज O and there is a tangent whose point of contact with the circle is P. Okay, मते प्रूव करिया अछि जे एठू परपेंडिकुलरली जो लाइन टा क्रॉस करिवो सेटा सेंटर रो पास करिवो बट एटा हम प्रूव करिया अछि तो हमें जानि छी we know that हमें कोन जानि छे जे radius is perpendicular on the tangent
at the point of contact. Also, radius passes through the center. So ame likhi pariba je this proves that कौन हबो जोटा एठी तमरा statement देइछ. This proves that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center. काहे ना आमे थ्योरम प्रूव कर दिले जे रेडियस टा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रे टेंजेंट सह 90 डिग्री क्रिएट करे and radius passes through the center. So this proves the statement. Okay. Now the sixth question. The length of a tangent from a point at distance 5 cm from the center of the circle is 4 cm. Find the radius of the circle. देखो. Let this is a circle with center O. The length of the tangent from a point at a distance 5 cm from the center. माने गोटे पॉइंट अछि जोटा कि सेंटर रु 5 cm डिस्टेंस रे 5 cm डिस्टेंस रे अछि. एटा कोन करछि ए P पॉइंट रु गोटे एमति टेंजेंट क्रिएट होछि. धरि नियो ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हला A. कोन कहछि लेंथ ऑफ दिस टेंजेंट इज 4 cm. And we have to find out the radius of the circle. तो देखो ये जगह रे H कौन OA is perpendicular on PA because we know radius is perpendicular on tangent at the point of contact. So OA is perpendicular on PA. That means this triangle is कौन right angle triangle. So by Pythagoras theorem सबुठी देखो Pythagoras theorem ही यूज होई प्रायतः लगी नहीं. तो Pythagoras theorem is the basic thing that you have to know. Okay, so by Pythagoras theorem कोन होबो perpendicular रो स्क्वायर माने OA रो स्क्वायर प्लस AP माने बेस रो स्क्वायर इज इक्वल टू OP रो स्क्वायर माने हला हाइपोटेनस रो स्क्वायर. सो OA रो वैल्यू हमें जानि ने तो इबो धन्य x रो स्क्वायर plus 4 रो स्क्वायर इज इक्वल टू 5 रो स्क्वायर. दैट मींस x स्क्वायर इज इक्वल टू एटा हला 25 एटा साइड गले -16. तो आसी जीवो केते एटा 9. तो x रो वैल्यू केते आसी जीवो 3 cm प्लस माइनस 3 आसीबो. बाकी हम जेतु लेंथ रो कथा कहू जे तो इट विल ऑलवेज कैरी पॉजिटिव वैल्यू. सो x वैल्यू केते हिजो 3 cm. सो रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3 cm. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एठी कोन अछि टू concentric circles are of radii 5 cm and 3 cm. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. Okay, देखो एठी गोटे नया कांसेप्ट आसिला हमर कोन कहि जे concentric circle बोली से कहि जे. What are concentric circles? Concentric circles are the circles who have a common center. जो दुईटा सर्किल रो कॉमन सेंटर अछि ताकू कहया हमें concentric circle. ओके, सो हमको कोन कहि जे the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. माने ए जो बड़ा सर्किल रो एम्ति गोटे chord जोटा कि ए छोटा सर्किल पई टेंजेंट होतबो हला. धरिनो ए बड़ा सर्किल रो chord याकू म नेम दे देली A and B. AB is the chord for the larger circle and AB will act as the tangent for the smaller circle. एटा धन्य ए पॉइंट जो टच करू या पॉइंट रो ना धन्य हे गला P. सो हमको कोन बाहर करयार अछि ए AB रो लेंथ बाहर करयार अछि. कोन बाहर करयार अछि टू फाइंड कोन लेंथ ऑफ AB हमको बाहर करयार अछि. देखो हमें केमती सॉल्यूशन बाहर करेबा कनेक्ट कर देले. OB is the radius of the bigger circle और तार वैल्यू केते अछि 5 cm and OP is the radius of the smaller circle तार वैल्यू हला 3 cm. हमें जानि छे जे रेडियस ऑफ टेंजेंट भीतर 90 डिग्री थाए को पॉइंट रे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. सो दिस ट्रायंगल विल बी a right angle triangle. So by
पाइथागोरस थ्योरम ठीक अछि तो पाइथागोरस थ्योरम कौन हम ओपी स्क्वायर प्लस पीबी स्क्वायर इज इक्वल टू ओबी रो स्क्वायर दिस इंप्लाइज ओपी टा केते 3 तार स्क्वायर करबा प्लस पीबी हमको बाहर करा अछि पीबी स्क्वायर इज इक्वल टू ओबी टा केते 5 तो 5 रो स्क्वायर हला तो पीबी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16 सो एठी पीबी कोन हे गला पीबी रो वैल्यू बाहरी जो 4 सेंटीमीटर पीबी रो वैल्यू केते हला 4 सेंटीमीटर ठीक अछि देखो आउ गोटे थ्योरम क्लास 9th रे थिला हमर जे रेडियस टा कॉर्ड को जदि 90 डिग्री क्रिएट करूची माने if radius is perpendicular on the chord then it will bisect the chord eta हमर 9th क्लास रे थ्योरम थिला हला if radius is perpendicular on the chord then it will bisect it that means so कोन हबो AP is equal to PB हबो काहे के हबो because this radius will be 90 degree on the chord AB so AB will be bisected at the point P ठीक अछि एई थ्योरम ता थिला तो AP is equal to PB PB रो वैल्यू हमर केते हे गला 4 तो AP रो वैल्यू भी केते हिबो 4 सेंटीमीटर हमहु कोन बाहर करयार थिला AB रो वैल्यू बाहर करयार थिला जार वैल्यू AP plus PB that means 2 into 4 is equal to 8 centimeter तो आंसर हमर केते हिबो 8 सेंटीमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle prove that AB plus CD is equal to AD plus BC हमको एटा प्रूव करियार अछि देखो एठी जो हमर डायग्राम दिया है एठी कोन अछि देयर इज ए सर्किल and there is a quadrilateral that circumscribe it माने circumscribe माने कोन से सर्किल रो एक्सटीरियर रे गोटे क्वाड्रिलेटरल अछि जोथिरे कि जहार जो चारिटा साइड अछि ऑल द फोर साइड्स टचेस द बाउंड्री पॉइंट ऑफ द सर्किल सेति में हम कहू जे दिस क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब द सर्किल हमहु कोन प्रूव करियर अछि AB plus CD माने ए जो ए साइड टा AB plus CD is equal to AD plus BC एटा हमको प्रूव करियार अछि देखो केमति कर प्रूव करिया हम देखो हमें फर्स्ट लिखि नबा देखो प्रूव रो गोटे टेस्ट मेथड हला जे जहा हम पाखरे अछि तार हमें डिस्क्रिप्शन लिखि देबो जे कोन कोन हम पाखरे अछि आ नेक्स्ट हमें देखिबा जे क्वेश्चन कोन डिमांड करू तो हम पाखरे जहा अछि आ जहा डिमांड करू से भितरे लिंक बाहर करियाटा को ही कहउचंदी हमरो प्रूफ ठीक अछि देखो तो हमको पचारी से AB plus CD रो वैल्यू तो AB को मु कोन लिखि परिबी AB को कोन लिखि परिबी AP plus PB लिखि परिबी हो कि नै एठी अछि प्लस CD को सेमति हम कोन लिखि परिबा CR plus RD लिखि परिबा नेक्स्ट RHS रे कोन अछि हमर AD plus BC AD plus BC रो वैल्यू कोन देखो AD को जदि हम भांगीबा AD को हम लिखि परबा AS plus SD plus सेमति BC को लिखि परबा PQ plus QC एई दीटा को हमको इक्वल प्रूव करियार अछि देखो हमें फास्ट देखिबा हम पाखरे कोन हमें जानि छी देखो हमें जानि छी जे कोनसी भी गोटे सर्किल रे यदि गोटे एक्सटीरियर पॉइंट रु गोटे एमती टेंजेंट क्रिएट होउची दीटा टेंजेंट हुए तो ए दीटा टेंजेंट रो लेंथ कोन हुए इक्वल हुए माने एटा जदी x सेंटीमीटर एटा भी हेबो x सेंटीमीटर ठीक अछि ता माने कोन एठी देखो तमे कोन हे जीवो PQ रो वैल्यूटा कहा से समान हो PB संग समान हो AP रो वैल्यू AS से समान हो DS रो वैल्यू DR संग समान हो CR रो वैल्यू CQ संगे CR रो वैल्यू CQ सह समान हो हला आ कोन रहिला आ तो किछि नै सब हे गला देखो एबे देखो जो जो जगह रे हमर AP अछि AP जगह रे हम कोन लिखि परिबा AS लिखि परिबा किंबा AS जगह रे AP लिखि परिबा
तो मु याको धन्य एमती लिखिदेली एएस जोटी अछि सेठी मु कोन लिखिदेली एपी लिखिदेली प्लस एसडी जगह कोन लिखि परिबा एसडी डीएस समान डीएस रहिलो अछि डीआर तो मु लिखि परिबी डीआर डीआर लेखो कि आरडी लेखो बोथ समान प्लस पीक्यू रहिलो कहा समान पीबी सह पीबी प्लस क्यूसी रहिलो कहा समान सीआर सह कहा सह सीआर सह देखो एबे एइडा आ एइडा पूरा समान हे गला तो याको हमें लिखि कोन परिबा AB plus CD this proves that AD plus BC is equal to AB plus C ठीक अछि एटा हे गला तमरो अप टू क्वेश्चन नंबर 8 हला नेक्स्ट वीडियो रे हमें 9 10 11 12 और 13 क्वेश्चन रो सॉल्यूशन करियो थैंक यू।